A lot of dramatic political developments over the weekend in Uttarakhand, and now you have a new Chief Minister. Pushkar Singh Dhami has taken oath as the 11th Chief Minister of Uttarakhand with 11 other cabinet ministers, and this includes the 3 dissenters who stormed BJP's legislative meet. Here are the latest updates. मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं. Uttarakhand gets its 3rd Chief Minister in 4 months. Amid hectic parleys, rising dissent and charges of political instability, उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में Pushkar Dhami took oath as the 11th Chief Minister of Uttarakhand. He was sworn in with 11 cabinet ministers from the previous government on Sunday evening at the Raj Bhavan. बहुत आजीविका छोटे से दुकानदारी से अपनी आजीविका चलाने के कारण जिनकी आजीविका का पूरी निर्भरता केवल और केवल ये पर्यटकों से और आने वाले लोगों से या श्रद्धालुओं से होती थी. हमारा प्रयास होगा कि उसको रास्ते पर लाएं और नौजवानों के जो पीछे हमारे जितने भी हमारे बैकलॉग हैं वो बैकलॉग हम भरेंगे. The youngest CM of the state has a lot on his plate. Several challenges as high as the Himalayan peaks in the state. Dhami will face state assembly polls in less than a year, loaded with the Herculean task of appeasing the dissenters who are allegedly miffed over his elevation. He will also have to clean party's image after changing 3 CMs in just 4 months amidst opposition's charges of political instability. भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड के अंदर राजनीतिक अस्थिरता फैलाने का काम किया, तो इसीलिए नए मुख्यमंत्री के बनने पर जो है भाजपा में जो है वो गुटबंदी उभर करके सामने आ रही है. BJP leadership has quashed claims of dissent in the party. पुष्कर सिंह धामी एक युवा तेज तर्रार शिक्षित नौजवान है. पार्टी ने उनको बागडोर सौंपी है, तो निश्चित रूप से कोई अच्छा परिवर्तन दिखाई देगा. दूसरे विधायकों के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है शायद ही कोई विधायक इस बात को लेकर के नाराज हो. हमारी एक अनुशासित पार्टी है और सब लोग एक अनुशासन के अंदर काम करते हैं. मुझे नहीं लगता है कि किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत पुष्कर सिंह धामी जी से हो. The dissenters also took oath with the new CM, quashing rumors of division that were taking rounds before his oath-taking ceremony. There were so many people in the party, those were very angry on this decision of Pushkar Singh Dhami's as new Chief Minister. But they also took the oath with Chief Minister Pushkar Singh Dhami. But will they support Pushkar Singh Dhami till 2022? There is a question mark. With camera person Pravesh Rana, Dilip Singh Rathod in Dehradun for India Today.